Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopijana Balavam Girivaradhare Yasodanandana Vrajadana Rajano Yamunati Ravanachari Jayo Ram Madhavo Kunja Vihari Gopijana Balavam Girivaradhari Yasodanandana Vrajajana Rajano Yamunati Ravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Balavam Girivaradhari Yasodanandana Vrajajana Rajana Yamunati Ravanachari Yamunati Ravanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Shri Advaita Gadadhar
Srivasaya Karina Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada This is Jagannath Baladeva Subhadra ki Jai Gauranitai ki Jai Sri Prabhupada ki Jai Jai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Narayanam Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamuvirayat Sri Chaitanya Manovistan Stapitanya Navutale Swayam Rupa Kadamayam Dadatyava Padam Tikam Vandeham Sri Guru Sutta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagat Pate Gopecha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Risavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpa Taruvya Chakripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanavyo Vaishnavavyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Lecture of Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 29, told between Narada and King Prachinavada. We read today text 61. Start by the word in Sanskrit, if you want to repeat it. Jayanam Imam Urjya Svasantam Purusha Yatha Karma Atmani Ahitam Munte Tadrisena Itarena Sayanam Imam Usvishya Vasantam Purusho Yata Karmatmani Haitam Bhukti Tadrisene Tarenaha Sayanam Imam Usvishya Vasantam Purusho Yata Karmatmani Hitam Bhukti Tadrisene Tare Naha Sayanimam Utrisya Vasantam Purusho Yata Karmatmani Hitam Bhukti Tadrisene Tare Naha.
Sayanam, living down on bed. Imam, this body, Urija, after giving up Svasantam, breathing, Puruja, the living entity, Yatha, as karma, activity, Atmani, in the mind, Ahitam, executed, Bhunte, and joy, Tadrechena, by a similar body, Itarena, by a different body, Va, all. Translation and purport by His Divine Grace, Exi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. The living entity, while dreaming, give up the actual living body. Through the activity of his mind and intelligence, he acts in another body, either as a god or a doll. After giving up this gross body, the living entity entered either an animal body or a demigod body on this planet or on another planet. He does enjoy the result of the action of his past life. You read it? Translate? सर्वों लेते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग लेता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में यथा देवता या कुत्ते के शरीर में कार्य करता है। इस स्थूल शरीर को त्याग देने के बाद जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वह अपने पिछले जीवन के कर्म फलों को भोगता है। On the purpose of Prabhupada say, although the root of distress and happiness is the mind, intelligence, and ego, a gross body is still required as an instrument for enjoyment. I will read from one point to other point. Although the root of distress and happiness is the mind, intelligence, and ego, a gross body is still required as an instrument for enjoyment. यद्यपि मन बुद्धि तथा अहंकार सुख तथा दुख के मूल कारण हैं, तो भी भोगने हेतु साधन स्वरूप स्थूल शरीर की भी आवश्यकता पड़ती है। The gross body may change, but the subtle body continue to act. स्थूल शरीर भले बदलता रहे, किंतु सूक्ष्म शरीर सक्रिय बना रहता है। Unless the living entity get another gross body, he will have to continue in a subtle body or a ghostly body. जब तक जीव को अन्य स्थूल शरीर नहीं प्राप्त हो जाता, वह सूक्ष्म शरीर या भूत प्रेत के शरीर में बना रहता है।
One become a ghost when the subtle body acts without the help of the instrument gross body. जब सूक्ष्म शरीर साधन रूप स्थूल शरीर की सहायता के बिना ही कार्य करता है तब जीव भेद बनता है As stated in this verse, Sayanam Mimanus Rishyas Vasantam. The gross body may lie on a bed and rest, and even though the machinery of the gross body is working, the living entity may live, go into a dream, and return to the gross body. जैसा कि श्लोक में कहा गया है साधन रूप सूर्य शोषण स्थूल शरीर बिस्तर पर लेटकर आराम कर सकता है और स्थूल शरीर रूपी यंत्र के कार्य करते रहने पर भी जीव स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में चला जाता है और फिर वहीं से फिर उसी में लौट आता है When he returns to the body, he forgets his dream. जब वह शरीर में लौट आता है तो स्वप्न को भूल जाता है Similarly, when the living entity takes on another gross body, he forgets the present gross body. इसी प्रकार जब जीव अन्य स्थूल शरीर धारण करता है तो वह अपने वर्तमान स्थूल शरीर को भूल जाता है The conclusion is that the subtle body, mind, intelligence, and ego create an atmosphere with desire and ambition that the living entity enjoys in the subtle body. निष्कर्ष यह है कि मन बुद्धि तथा अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है जिसे जीव सूक्ष्म शरीर में ही भोगता है Actually, the living entity is in the subtle body, even though the gross body apparently changed, and even though he inhabits the gross body on various planets. वास्तव में जीव तो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है भले ही स्थूल शरीर बदलता रहे और जीव विभिन्न ग्रहों में स्थूल शरीरों में निवास करे All the activity performed by the living entity in the subtle body are called illusory because they are not permanent. सूक्ष्म शरीर में जीव द्वारा संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य भ्रामक कहलाते हैं क्योंकि वे स्थायी नहीं होते Liberation means getting out of the clutch of the subtle body. मुक्ति का अर्थ है सूक्ष्म देही के चंगल से बाहर निकलना Liberation from the gross body simply involves the transmigration of the soul from one body to another. जबकि स्थूल शरीर से मुक्ति पाने का अर्थ केवल इतना ही है कि आत्मा का एक स्थूल शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होना When the mind is educating Krishna consciousness or higher consciousness in the mood of goodness, one is transferred either to the upper heavenly planet or to the spiritual world, जब मन को सकल the Vaikuntha planet. कृष्ण चेतना की शिक्षा मिलती है तो मनुष्य या तो सर्वलोक को या वैकुंठ लोक को जाता है One therefore has to change his consciousness by cultivating knowledge received from Vedic instruction from the Supreme Personality of Godhead through the disciplic succession. अतः मनुष्य को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मूल पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त वैदिक आदेशों से प्राप्त ज्ञान के अनुशीलन से अपनी चेतना बदलनी होती है If we train the subtle body in the life I always thinking about Krishna, we will transfer to Krishna Lok after leaving the gross body. यदि हम इस जीवन में सूक्ष्म शरीर को सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करके प्रशिक्षित करते हैं तो स्थूल शरीर को छोड़ने पर हम कृष्ण लोक को जाएंगे This is confirmed by the Supreme Personality of Godhead. Janma karma chamedivyam evam yoveti tatvataha kyatvadhyam punar janma naiti mameti sorjuna. इसी पुष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने की है जन्म कर्म से में देव के वेदी का प्रकार तत्व के हम लोग ने मान की सोच
One who know the transcendental nature of my appearance and activity do not upon leaving the body take his birth again in this material world but attain my eternal abode, O Arjuna. Bhagavad Gita 4.9. ये अर्जुन जो व्यक्ति ये प्राकृतिक तथा कर्मों की जीवन प्रवृत्ति से अवगत है, वह शरीर को त्यागने के पश्चात इस संसार में जन्म नहीं लेगा, बल्कि मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 57। That the change of the gross body is not very important, but the change of the subtle body is important. इस प्रकार स्थूल शरीर का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। The Krishna consciousness movement is educating people to enlighten the subtle body. कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों के सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करने की शिक्षा प्रदान करता है। The perfect example in this regard is Ambarisha Maharaj, who always engaged his mind on the lotus feet of Lord Krishna. इस प्रसंग में आदर्श उदाहरण अम्बरीश महाराज का है, जिन्होंने अपने मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाए रखा। Savai Mana Krishna Padaravinda Yoho. Similar in this life, we should always fix our mind on the lotus feet of Krishna, who is present in his Archa Vigraha, the incarnation of the deity in the temple. इसी प्रकार इस जीवन में हमें मंदिर में अर्चा विग्रह रूप में प्रस्तुत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को निरंतर स्थिर रखना चाहिए। We should also always engage in his worship. हमें उनकी पूजा में सदैव संलग्न रहना चाहिए। If we engage our speak in describing the activity of the Lord and our hear in hearing about his pastime, and if we follow the regulative principle to keep the mind intact for advancing in Krishna consciousness, we should certainly be elevated to the spiritual platform. यदि हम अपनी वाणी को श्री भगवान के गुणगान में और कानों को उनकी लीलाओं को श्रवण करने में लगाएं और नियामक सिद्धांतों के पालन द्वारा मन को कृष्ण चेतना अग्रसर करने हेतु अक्षर रखें, तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकेंगे। Then, at the time of death, the mind, intelligence, and ego will no longer be materially contaminated. तब मृत्यु के समय मन बुद्धि और अहंकार भौतिक रूप में दूषित नहीं होंगे। The living entity is present, and the mind, intelligence, and ego are also present. जीव के साथ मन बुद्धि और अहंकार भी उपस्थित रहते हैं। When the mind, intelligence, and ego are purified, all the activity sense of the living entity become spiritual. जब मन बुद्धि और अहंकार शुद्ध हो जाते हैं, तो जीव की सारी कर्मेंद्रियां आध्यात्मिक बन जाती हैं। Thus, the living entity attained his Sachitananda form. इस तरह जीव सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेता है। Yeah, this is the really liberation when the devotee recuperate the Svarupa Siddhi. This is the real liberation. It's different kind of liberation, but Srila Prabhupada say the really liberation is when you recuperate your Svarupa Siddhi. यही वास्तव में मुक्ति है, जब हमारे लिए आध्यात्मिक बन जाते हैं। The Supreme Lord is always in his Sachitananda form, but the living entity, although part and parcel of the Lord, become materially contaminated when he decides to come to the material world for material enjoyment. परमेश्वर तो सदैव उनके सच्चिदानंद रूप में होते हैं, किंतु जीव से भगवान का अंश होने पर भी जब भौतिक सुख भोगने हेतु भौतिक जगत में आने की इच्छा करता है, तब वह भौतिक रूप से दूषित हो जाता है। Yeah. In another context, Srila Prabhupada says the Mahatattva is created to
satisfy the desire of the Nityavadas. महत्व In other context, Srila Prabhupada says the Mahatattva is created to satisfy the desire of the Nityavadas. Nityavada means eternally conditional. तो शुरुआत इस संबंध में कहते हैं कि जो महत्व की उत्पत्ति होती है वो नित्यवत आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है। Yeah. The prescription for returning home back to Godhead is given by the Lord Himself in Bhagavad Gita 9.34. श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्याय के 24 श्लोक में अपने धाम लौटने का नुस्खा बताया है। Manmana bhava madvakto madhyajimam namaskuru mamevaishyasi satyanti pratijanne priyosme. Parayana, excuse me. Always think of me and become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Be completely absorbed in me. Surely you will come to me. सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझमें ही पूर्ण रूप से मगन रहने पर तो निश्चित रूप से मेरे पास आओ। So there is Narada Muni. He told me with Narada and King Prachinavari, because the King Prachinavari he got tendency to perform material activities. यहाँ पर नारद जी राजा प्राचीन परिषद को उपदेश दे रही हैं। तो राजा प्राचीन परिषद जो है बहुत ही कार्यों में बहुत ज्यादा संलग्न Yeah, थी according with Karma Kanda. और उसमें कर्म कांड में बहुत Yeah. ज्यादा There is the pravritin. The pravritin is the way of pleasure to enjoy. Pravritin. प्रवृत्ति तो ये आनंद लेने का तरीका है जिसको Yeah. पसंद करते हैं। But this way, pravritin marga, this way is regulated by karma kanda. तो जो प्रवृत्ति मार्ग है उसको कर्म कांड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। Because the pravritin marga is the way to enjoy प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है हमारी भोग करने की material enjoyment. Yeah. भौतिक भोग करने की इच्छा। Yeah. But if that is not regulated by karma kanda, that become sinful activities. और यदि हमारी भौतिक भोग करने की इच्छाओं को कर्म कांड के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो ये पाप कर्म है। Yeah. Karma, dharma, artha, kama, moksha. So actually, the most of people in this material world that then are concentrating in not dharma but artha and kama. तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से ये जो चार पुरुषार्थ हैं ज्यादातर लोग जो हैं धर्म में नहीं अर्थ और काम में लगे रहते हैं। From the moment when we get one human form, we have three duty. तो जब हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो हमें ये कर्तव्य है। The first is spiritual. तीन कर्तव्य हैं उसमें से पहला है आध्यात्मिक। The second duty is take care of family. तो पहले अपने परिवार का, And the third duty is social. दूसरा है समाज का। But actually, the most of people know in Kali Yuga, most of people then don't care about the first duty, spiritual duty. तो कलयुग में ज्यादातर लोग जो पहला कर्तव्य है आध्यात्मिक जो कर्तव्य है उसकी वजह से ध्यान नहीं देते। And for that is never break the samsara. और इसी वजह से संसार से कभी बाहर नहीं निकलते। So the process Bhakti Yoga is to stop this kotijanma. तो भक्ति योग का जो प्रोसेस है उसका कार्य है इस जन्म कर्म चक्र को रोकना। Yeah. But this for materialist people that become difficult because they get attachment.
उन लोगों के लिए इस कार्य से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी आसक्ति हो जाती है, Material attachment. Yeah. भौतिक आसक्ति। Yeah. So nobody can go back to Vaikuntha with material attachment. तो वैकुंठ लोक में कोई भी व्यक्ति भौतिक आसक्ति के साथ नहीं जा सकता। Mm. So by the process, by bhakti yoga, the subtle body become purified. तो भक्ति योग के द्वारा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो शुद्ध हो जाता है, And by this purification disappear. और इस शुद्धिकरण के द्वारा हमारे जो भौतिक कर्म से नष्ट हो जाते हैं। Jarayanti ajuyokosham nigirnam analo yatha. This slok is in the Bhagavatam 3:25-33. Someone get there? 3:25-33. And that is Jarayanti ajuyokosham nigirnam analo yataha. By practice of devotional service, the subtle body be dissolved. 3:25-33। Can you read? The devotional service dissolves the subtle body of the living entity without separate effect, just as fire in the stomach digests all entities. Yeah. भक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर को उसी प्रकार से नष्ट कर देती है जिस प्रकार से हमारे पेट के अंदर जो आग है वो भोजन को डाइजेस्ट कर देती है। With no any separate efforts. उसके लिए स्वतः से कोई मेहनत करने का It's right like that? With no any separate effort. Like the stomach digested everything what you eat. It's like that? It's like that, the slok? Yes. Like the stomach digests everything what you eat. Yes. Yes. Jarayanti asyokosam nigirnam analo yataha. By practice of bhakti yoga, the subtle body become dissolved. तो भक्ति योग के द्वारा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट हो जाता है। And that is the greatest solution. यही सबसे महान सॉल्यूशन है, Because the problem is in the subtle body. और जो प्रॉब्लम है समस्या है वो सटल शरीर में सूक्ष्म शरीर में ज्यादा है। And this is look there. Narada Muni, he touched this argument about how is the process, what happened in the subtle body. तो नारद जी इस श्लोक में इस बारे में चर्चा करने की सूक्ष्म शरीर कैसे बना था। That is science. That is no religion. That is science. ये धर्म नहीं है, ये विज्ञान है। The science of Krishna. कृष्ण के विज्ञान। So Prachinavari, he got tendency to perform material activities. तो जो राजा प्राचीन उसे हैं भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा समर्पित थे। And that is also in the Vedic process, that is no prohibit. और इस कार्य में सिद्ध करने के लिए कभी भी सिद्धों को मना नहीं है। But we follow the direct process. Bhakti yoga is direct process. लेकिन हम जो है वो भक्ति योग को पालन करते हैं क्योंकि भक्ति योग जो सीधा मार्ग है। Vedic process is indirect process. और ये जो तरीका है इसमें कोई समस्या नहीं है। Yeah. Our process is Ravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasivanam, Archana, Vandana, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedana.
in all these activities, Krishna is in the center. तो हमारा जो तरीका है ये नौका भक्ति का है और इस तरीके में कृष्ण जो है हमारे सेंटर पे रहते हैं, हमारे Yeah. केंद्र में। But in the Vedic process, it's not like that. लेकिन वैदिक प्रोसेस है उसमें ऐसा नहीं है। That is approved. One can follow that, but it's undirected. वैदिक जो प्रोसेस बताया है वो मान्य है, लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। Sacrifice, restriction of family life, ये करना और पारिवारिक जीवन का पालन पोषण करना, sacrifice, restriction of family life, studying Vedas, वेदों का अध्ययन करना, practice of yoga, योग के अभ्यास करना, worship demigod, देवताओं की पूजा करना, mind control, मन को नियंत्रित करना, charity, दान देना, tapasya, तपस्या करना respect for varnashrama. और उपवास का पालन। So this is activities of Vedic process. तो ये सारे कार्यकलाप जो हैं वो वैदिक प्रोसेस के हैं। All this activity is to reduce darkness. और इन सारे कार्यों का उद्देश्य है वो अंधकार को कम करना। What we perform is to satisfy Krishna. लेकिन हम जो कार्य करते हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। But in the Vedic process, in these activities, is not, you don't offering anything for Krishna. लेकिन इन कार्यों में कुछ भी कृष्ण के लिए नहीं है। Charity, for example, charity. दान देना, Yeah, you give charity. That is Vedic. आप जो दान देते हैं ये वैदिक है। But Srila Prabhupada say the best charity we can do is to give knowledge. और प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम लोग सबसे बड़ा दान है कि हम लोग ज्ञान दे सकते हैं। For example, some part in Africa, there is problem for food. जैसे कि लोग There is no food, कहीं पर भोजन नहीं है, very less food. बहुत कम भोजन है। So rich men go there to make altruism, to make charity. तो जो धनवान व्यक्ति है वो वहाँ जाता है दान देने के लिए। And he bring one plane full of thing to cooking. और वो जो है भोजन बनाने का सामान देते हैं And he cooking and give food for everybody. और वो जो भोजन बनवाते हैं वो सबको देते हैं। And that is very good activity. और ये बहुत अच्छा कार्य है। The next day he come back, and next day people get angry. तो जब वो वापस आता है तो फिर जाता है, फिर अगले दिन सब भूखे होते हैं। Yeah. So for that, Prabhupada say the best charity is to give knowledge. इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा दान जो है वो ज्ञान है। Sacrifice, worship demigod. That is not that is what you offer for Krishna. तो जो दुर्गा की पूजा करता है इसमें कुछ को क्या अर्पण करते हैं। Practice of yoga, no? Astanga yoga, pranayamas. I saw many sadhus do that. तो जो हम योग अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग विधि का पालन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे हम इसको क्या देते हैं? कई साधुओं को ऐसा करते हुए देखते हैं। And it's very good for health. लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। But what you offer for Krishna? लेकिन आप कृष्ण को क्या अर्पण कर रहे हैं? Yeah. Studying Vedas. वेदों का अध्ययन करना। We read in Bhagavatam, Vedeshu Durlavaha. हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, Vedeshu Durlavaha. जो कि बहुत Yeah. दुर्लभ है। You cannot know the Lord by studying Vedas. भगवान को हम वेदों का अध्ययन करके नहीं जान सकते।
Adurlabaha Atmabhakto. दुर्लभम आत्मभक्तो। By practice devotional service, you can know the Lord. और भक्ति योग के द्वारा आप भगवान को जान सकते हैं। Restriction of family life. पारिवारिक जीवन, Restriction. This is also Vedic. The restriction of family life. पारिवारिक जीवन में केंद्रित करना। In our practice is also that हमारा भी इसी प्रकार का अभ्यास है। Srila Prabhupada say, when you overcome the age of 50 years old, you must to leave the family, take vanaprastha. शुक्रवार कहते थे कि जैसे ही आपकी उम्र 50 के पार हो जाए, तुरंत आप पारिवारिक को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करें। And that is difficult for people, even for devotees, ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि भक्तों के लिए भी, because they get attachment. क्योंकि उनका आकर्षण हो जाता है, आसक्ति हो From जाती the first day he see the son when he born, है। तो पहला दिन जब वो अपने पुत्र को जन्म देने के बाद देखता and है, he see every day how the children born, the grown. और वो देखता है कि हर रोज कैसे बच्चा बढ़ रहा है। And after the children start to speak, to walk, and they get the father and mother get attachment. और जैसे ही बच्चा बोलने और चलने लगता है, तो माता पिता उसकी ओर और ज्यादा Yeah. हो जाता And है। after the children go to the school, और उसकी भी शुरुआत में बच्चा स्कूल जाने लगता है। yeah. And after father and mother arrange marriage for the children because he reaching 20 years old. और जब बच्चा अगर 20 साल में कहीं पहुंच जाता है, तो माता पिता उसका विवाह की तैयारी करते हैं। So these children grown and married and get children. और इस प्रकार ये जो बच्चा है, इसका जो बड़ा होता है, इसका विवाह होता है, उसके भी बच्चे होते हैं। So the grandfather become attached not with the son, but with the son of the son. और इस प्रकार से जब दादाजी बन जाते हैं, तो वो अपने पुत्र को छोड़ करके पोते से आसक्त हो जाते हैं। Yeah. And that is very strong. ये आसक्ति This जो है, attachment is very strong. ये आसक्ति जो है बहुत ही मजबूत है। Yeah. So the guru say, okay, now 50 years old, you leave the family and go to the ashram to do service and forget your family, take vanaprastra. And that is surprise for और जब गुरु कहते हैं कि अब आपका उम्र 50 साल हो गए हैं, आप पारिवारिक जीवन को छोड़िए और वापस आश्रम स्वीकार करके भगवान की सेवा कीजिए, तो लगता है बहुत आश्चर्य की बात है। the mind follow two process, sankalpa and vikalpa. और ये हमारा जो मन है, ये दो तरीकों को पालन करता है, संकल्प और विकल्प। So when the mind read in the Prabhupada book on 50 years, the man must to take vanaprastha and leave definitively the family, the mind become agitated. Vikalpa, refusal. तो जब हम बाजी की पुस्तकों को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि बाजी देखते हैं कि 50 साल उम्र होने के बाद आपको पारिवारिक जीवन को छोड़ देना चाहिए, तो हमारा माइंड जो है वो एजिटेट हो जाता है और उसको छोड़ने के बाद का विकल्प। That is really, I ask you, excuse me, that is really or not? How old are you? क्या ये सही है या गलत है? How old are you? How old are you? आपकी उम्र क्या है? 32। 32. Oh, you must to you you must make a plan for the future. Yeah, it's difficult. So we in Bhakti Yoga there is activities similarly with the Vedic process. तुम्हारा जो भक्ति योग है उसके कार्यकलाप जो है वैदिक कार्यकलापों की तरह ही है। Vedacha sarvairaham evavedyo vedanta krid vedavi devachaham. Krishna said the aim of the Veda is to know me. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय के 19 में कहते हैं कि वेदों का पढ़ने का उद्देश्य मुझे जानना है।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I saw many devotees, 60 years old, then get no idea to take Vanaprastha. मैंने कई भक्तों को देखा है जिनकी उम्र लगभग 60 साल के करीब है, लेकिन उन्हें वापस आसन लेने का कोई Yeah. आइडिया नहीं। Yeah. And here today we read the process, what happened in the subtle body. और आज हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर है उसमें वो चीज होता है। The problem is not in the gross body, the problem is in the subtle body. वास्तव में स्थूल शरीर में कोई समस्या नहीं है, समस्या है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में। There is the attachment, वहाँ पर आ सकती है, there is the false ego. वहाँ पर मिथ्या अहंकार है। The false ego have the tendency to create atheism. और ये जो मिथ्या अहंकार है इसमें आसक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। Attachment with body. अपने शरीर से आसक्त हैं। But Jarantia Shuyokosam Nigirnam Analo Yataha. By practice, devotional service, the subtle body be dissolved. और भक्ति योग के द्वारा ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। In this chapter is so many instructions from Narada Muni to Prachinavari. इस अध्याय में नारद जी राजा प्राचीन ऋषि के कई सारे उपदेश दिए हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There is some questions about this argument. ये प्रश्न Yes. आज ही asking if the Take out the microphone. if the subtle body is dissolved, then what will go to that will not to How go back? By the pure consciousness. हमारी सुख चेतना हो जाए। Yeah. By the pure consciousness. For that, Prabhupada founded, Srila Prabhupada founded International Society for Krishna Consciousness. Because the consciousness is the really identity of the living being. जो इस्कॉन की फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ। तो ये जो भावना है कॉन्शियसनेस यही मुख्य चीज है। Yeah. When the consciousness is pure, there is no any more problem of subtle body. जो चेतना शुद्ध हो जाती है उस सूक्ष्म शरीर की कोई समस्या नहीं है। What he asked? He asking, is it equal to distribute prasadam and knowledge? Pardon? Prasadam? Yes. To distribute prasadam and with the knowledge. Is it equal? Give prasadam and give knowledge. Yeah. He's asking how much time it takes to
I know this question. I hear every day. How much time to go back to Vaikunta? This is a question. Eh? How much time it take to dissolve this subtle body? Uh-huh. Well, to chant in one round, you employ 8 minutes. So you need so many 8 minutes to dissolve this body. आपको एक माला करने में 8 मिनट लगते हैं, इसको करने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। This is the question. This is the mind, you know. The mind won't result immediately. तो जो हमारा मन है वो चाहता है कि उसको रिजल्ट जो है वो दिखाए। Yeah, many times someone asked this question because he want to go back today. तो जानना चाहते हैं कितना समय लगेगा हमको भगवत धाम में। The important is not when we go back. The important is to be in Krishna consciousness. तो वो ये इस ज्ञान बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम भगवत धाम में कब जाएंगे और जो प्रोसेस है उसको देखना है। Yeah. If you born in one family very, very rich, यदि आप किसी बहुत धनी परिवार में जन्म लेते हैं to have all these riches, you must just to stay with the family. आप यदि धन चाहिए तो आप उस परिवार में रहना पड़ेगा बस। You understand that, this point? You born in one family, very rich family, and you want to have all these riches. You are children, but you want to have all these riches. But you must to stay with the family. Because after 20 years, 30 years, the uncle leave the body, the father, Margea, and the brother, and in one day, you get all these riches. तो आप यदि धनी परिवार में जन्म लेते हैं और उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं केवल आप उस परिवार में बने रहना है उस समय के बाद जो पिता है चाचा है भाई बहन सब चले जाएंगे तो धन आपको प्राप्त हो जाएगा। You have just to stay. आपको केवल रहना है। And the family say, okay, now you go to the school, now you go to the college, now you do that. And you just stay. तो परिवार वाले कहते हैं कि तुम स्कूल जाओ कॉलेज जाओ बस आपको रहना है। Automatically, one day, you will get all this fortune. और अपने आप एक दिन आपको सारा भाग्य सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। And Krishna consciousness is the same. कृष्ण भावना में भी इसी प्रकार से You want to have this fortune now. आप इस सौभाग्य को कभी प्राप्त करना This चाहते is हैं, the process is not like that. लेकिन जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से नहीं है। You must to stay. You must to perform devotional service. And one day you say, oh, I am in Vaikunta. आपको रहना है और भक्ति में सेवा करनी है फिर आप एक कहेंगे हो मैं वैकुंठ में हूँ। Yeah. The mind won't result immediately. हमारा मन जो है तुरंत परिणाम चाहता है। Yeah. Mind must to become purified. मन को शुद्ध करना चाहता The pure devotee don't want to go back to Vaikunta. है। जो शुद्ध भक्त है वो वैकुंठ को नहीं जाना चाहता The pure devotee, he want to stay here to help everybody. है। जो शुद्ध भक्त है वो यहाँ रहना चाहते हैं ताकि बाकी सबकी सहायता कर सकें। That is what Narada Muni do. जो भी नारद मुनि करते हैं Why to stay here to preach in Prachinavari? वो यहाँ रह करके क्यों राजा पास में को No. प्रचार करना है? Why he don't go back? He can go back. वो भगवत धाम क्यों नहीं जाते वो तो जा सकते हैं। But no, he want to make devotee Prachinavari and all the sun. वो राजा प्राचीन देश से उसके भक्त बनाना चाहिए। Other question? Yeah. 1, 2. No, you ask one question. Maybe they are the men. He's asking
can pure devotee deviate from this path to bhakti? Pure devotee Is it possible for a pure devotee to deviate from the path of bhakti? to stop practice. Yeah. To go in different direction. To stop bhakti yoga. He never will decide that. सुबह कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ना। No, because the pure devotee feel love for Krishna. If you feel love for one person, you don't leave this person. शुद्ध भक्त जब हम भगवान को फील कर पाते हैं तो यदि आप किसी व्यक्ति को फील करते हैं तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। The devotee there asks something. How can it be possible? He is asking that you are saying that after 50 one should take the Vanprastha ashram. After 50 years, Yes. one should take the Vanprastha ashram. Prabhupada say. Yeah. Yeah. But today, people are doing marriage after 30 or Mhm. 35. Yeah. So how they can balance? This is also one excuse to don't take vanaprastha. ये भी मान पसंद नहीं है पाना It's mind argument. Because the mind vikalpa, the mind don't want it. ये मन का जो है वो बहाना है विकल्प है। Yeah. This is the mind argument. The mind look for one way to avoid vanaprastha. तो ये मन का बहाना मन चाहता नहीं करना तो वो बहाने ढूंढता है। If you really follow Prabhupada, you marry with 45 years old, and after 5 years take vanaprastha. यदि आप लोग वास्तव में बाजी को फॉलो करते हैं तो 45 उम्र में यदि शादी करते हैं तो 50 में मारना सकते हैं। This is Grihasthas don't like this argument, but Prabhupada leave that writing in the book. ये व्यस्त जो है उसके पास बहाना देते हैं कि भगवान ने पुस्तक में लिखा है। Yeah. Where is your family? कहाँ है तुम्हारा family कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया Eh? Australia. Australia. So you vanaprastha? हाँ। No. Mhm. It's difficult. But to go back in this life, go back to Vaikuntha, all devotees go back. But to go back in this life, you must to follow strictly all the instructions. सभी भक्त वैकुंठ लोग जाएंगे लेकिन इसी जीवन में वैकुंठ लोग जाना है तो बाजी के जो आदेश हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jagannath Baladeva Subhadra ki jai, Gaur Nitai ki jai, Tai Gaur Premanande. Thank you for your attention. Hare Krishna. तो हम महाराज जी का धन्यवाद देंगे जो से हरे कृष्ण महामंत्र